कि फ़िज़िक्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, किन बुक्स को फ़ॉलो करना चाहिए, किन बुक्स को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए। Watched all the lectures very thoroughly. The very next thing that comes is the question practice. Say if you did 10 questions today, and let's say you were able to make 6 or 7 questions, so that when you are revising the short notes, so let's come to the next point जो कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि हमें एच सी वर्मा सॉल्व करनी चाहिए, क्या हमें डी सी पांडे सॉल्व करनी चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो, लाइक इट वाज वेरी मच अवेटेड, कि फ़िज़िक्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो करना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज़ को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, किन बुक्स को फ़ॉलो करना चाहिए, किन बुक्स को फ़ॉलो नहीं करना चाहिए, what is the importance of lectures, what is the importance of conceptual clarity, like the importance of short notes, the importance of notes. Like we'll be discussing all of them in today's video कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कितनी इंपॉर्टेंस है, मॉक टेस्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, कैसे उनको एनालाइज करना चाहिए। विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट इन टुडेज वीडियो। So, for all those who do not know me, let me introduce myself. So, myself, Harshit Mehta. I secured an All India rank of 1447 in the NEET 2026 examination with an overall score of 650 on 720. And along with that, like in JEE mains as well, I had scored 98 plus percentile, like in the same year. Like I did all these things along with my class 12th. So now let me give you a very brief कि इस वीडियो में कैसे कैसे like we'll be approaching to the things, we'll be approaching to different points. Like firstly I'll give you the point wise guidance, like एक एक चीज़ को like I'll be taking one topic and I'll be giving you the guidance for that, then I'll be taking the other topic, then I'll be giving you the guidance for that, then in the very end, like do not skip that, do not you cannot afford to skip that at all कि at the very end I'll be giving you, I'll be combining all these points, and then I'll be telling you that if you are going to start a chapter, how you have to approach that, like from the very starting to the very end, all the mistakes that you might make over there, like the strategies that you have to follow, the roadmap that you should have when you are approaching physics, when you are about to start the new chapter, how you should start that, and when you are there in the middle of the chapter, what are the things that you have to take care of. Like I'll be covering all of that, and I'll be telling you that at the very end. Like first of all, we'll move point by point, and after that I'll be combining all those points, and then I'll be giving you a quick summary, or it is like that I'll be combining all those points and I'll give you that master point, that how you have to approach physics. So let's start with the very first point, that is the importance of lectures and the importance of conceptual clarity in physics. Like in today's world, the best way of yours to clear your concepts is through lectures only. Like obviously you cannot open the NCERT of physics and start reading it. You cannot have 10 theory books, you read that and you clear your concepts. That is something that will take a lot of your time, and it's not something like, it's not practical as well in today's world, especially when like this much competition is there, आपके पास में इतना कम time है. So the best method is to follow the lectures. Like the teacher that will be teaching you there has already read those 10 books जो आप सोच रहे हो पढ़ने का, and after that the teacher is teaching you and giving you his notes. So it is must to follow the lectures very consistently and with great focus. You have to follow all those lectures. In those lectures only you'll get the actual clarity of your concepts, and that is the first and foremost thing. Like be it physics, be it chemistry, or be it bio, that is the foremost thing. Like it should be the foremost thing that you should have your focus on, right? Now whenever you are learning new concepts, you must make sure that you are learning it with great focus, and you should be like this should be clear in your mind ki when you have to apply those concepts, where you have to apply those concepts, and where not to apply those concepts. You should have that clarity in mind कि मुझे इन concepts को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और कब लगाना है. That's what I'm trying to say, that when to apply, where to apply, and how to apply that concept. That is the biggest thing, right? When we are studying and we like, it seems to us that कि हमें ये concept अच्छे से clear हो गया है, but what happens is when it comes to the question part, like whenever we are trying to solve some questions, like we are not able to apply that concept. So that's what you have to you should have this in mind when you are watching the lectures, that
right now I am understanding these concepts, right now this theory is in front of me, but at the same time I should have this in mind that after some time I'll be solving the questions as well, so I should learn it with great focus. They should be in there in my, like they should be there in my mind. Yeah, I have to learn at the very same time that how I have to apply this concept, where I have to apply this concept, and when I have to apply this concept. Now the very next things that comes after the conceptual clarity, like you have gained the conceptual clarity, like your concepts are crystally clear, you know when to apply this concept, how to apply this concept, and where to apply this concept. You have learned this, you have watched all the lectures very thoroughly. The very next thing that comes is the question practice. Like you have to keep this in mind that the questions, especially in physics and chemistry, like in fact in bio, the questions are the part of your journey. Like it should be never in your mind, you should never have this kind of mindset that I have watched each and every lecture thoroughly, so I am in a position that I'll be able to solve 100% of the questions. Like this 100% thing would never be there. You have to keep this in mind that these questions are the part of my journey and I have to learn from each and every question. There are some questions जहाँ पे मैंने silly mistakes कर दी, there are some questions जहाँ पे शायद मैंने conceptual mistake कर दी, हो सकता है कोई फॉर्मूला याद नहीं था. सो यू हैव टू लर्न फ्रॉम द क्वेश्चंस, यू हैव टू सी व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक आई डिड व्हाइल आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया. लाइक दीज क्वेश्चंस आर दैट टू टेल यू दैट दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक इन द मेन एग्जामिनेशन. सो you have to learn it before that only, you have to learn through these questions only which are coming in your journey, and you do not have to repeat those same mistakes. Like you should never have this mindset that मैंने सारे lectures देख लिए, अब अगर मेरे से क्वेश्चन बना सो आई एम अ विनर, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन आई एम द लूजर. दिस शुड नेवर बी योर माइंडसेट. लाइक for example, this would happen to you multiple times, this would have happened to you multiple times कि लेक्चर पूरा अच्छे से देख लिया, सारे फार्मूलाज भी याद कर लिए, एंड यू आर हैविंग दिस मच कॉन्फिडेंस कि हाँ मुझे अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है, एंड देन देयर आर 10 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम ओनली एबल टू सॉल्व 2 or 3. दैट इज वेरी नेचुरल एंड दैट इज वेरी कॉमन. लाइक दिस यूज्ड टू हैपन विद मी एज वेल. बट व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट you have to you should have over here, that first of all appreciate yourself that you solved those 2 or 3 questions. That means you have learned something new, then only you were able to solve those 2 or 3 questions out of the 10 questions. Then after that those 7 or 8 questions जो आपसे नहीं बने, you have to you should know this कि क्यों नहीं बने वो. लाइक कोई कंसेप्चुअल एरर था, लाइक मेरे कुछ कंसेप्ट्स में कुछ मिस्टेक है शायद, है ना, तो आई हैव टू रिफाइन दैट, आई हैव टू लर्न इट. या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई, सो यू हैव टू इम्प्रूव इट. या फिर आई कंज्यूम्ड, लाइक आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, सो यू हैव टू फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट एज वेल. सो दीज आर सम मिस्टेक्स दैट यू हैव टू नोट डाउन. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू जो आपसे नहीं बना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट कि वो क्वेश्चन क्यों नहीं बना. Like it can be the calculation error as well, you have to consider it as your mistake, then only you will be improving it. First and the foremost thing is to accept that yes, this was my mistake, to accept this fact that yes, I was not able to make that question. Then you have to note down ki kya mistakes thi. You should have that in your mind. If you cannot note down it anywhere, you should have that in your mind that these are the mistakes that I am repeating in the questions that I am doing. Then you have to improve it one by one. For example, अगर कोई silly mistake है, कोई calculation error है, कोई time manage नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा time लग गया, तो you have to improve your speed. So you have to work on that. These are some things that you will improve time. These things will take a bit of time. So you will improve it day by day, week by week, time by time. So you have to learn from your mistakes and you do not have to repeat the same mistakes. That's that should be the purpose of your question practice. This should not be the purpose of your question practice कि मैंने lectures देख लिए हैं, अब question बना, so I am a winner, and if not then I am loser. This should not be your this should not be in your mind कि अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है so I am a loser. Not at all. You have to learn from that question and then you have to repeat that question. Like you have to solve that 2 times, 3 times. Then after 5 days, after 6 days, you have to solve the same questions again. पहले when you are at the very starting phase, when you are at the beginning phase, you have to solve the same questions multiple times so that at least you can master those concepts. At least you can master some time managing skills. You can master the speed. You can master the calculation.
With that, what will happen, your thinking capability, your thinking capacity will increase time by time. Then you have to you have to increase your spectrum, you have to solve some new questions. After that, initially you have to solve the same questions again and again, so that you can master them once, and once you have mastered them, your thinking capacity has already increased. Then you have to move to a broader spectrum. You have, after that you can move to, you after that you can move to certain books, then you can start solving them. बट इनिशियली यू शुड मेक श्योर दिस कि मैं लेक्चर कर रहा हूँ, डीपीपी कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसको रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट आई एम एबल टू एटलीस्ट मास्टर दिस मच. Because this is the mistake of many, that especially when we have entered class 11th, we think कि मैं ये वाली book भी कर लूँ, ये वाली book भी कर लूँ, इस book को भी follow करता जाऊँ. So whenever we are taking so much things, like so many things on our plate, we are not able to handle, or we are not able to master even one of them. So you do not have to repeat this mistake, you do not have to do this mistake. सबसे पहले लाइक कम कम लो, बट मेक श्योर दैट जितना भी आप कर रहे हो, यू आर डूइंग इट विद ग्रेट फोकस, एंड यू आर डूइंग इट वेरी प्रॉपरली. इट्स नॉट लाइक कि 10 चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ बट एक भी चीज़ फॉलो नहीं हो पा रही है. सो यू डो नॉट हैव टू डू दैट. So when we are discussing about the questions, the next point that I have written over here, that you have to spend a lot of time with the questions, like especially when it is physics or physical chemistry, more than theory. You have to give your time to the questions, you have to spend a lot of time with that. एक question नहीं बना, analyze it very properly, because if you will be expanding without consolidation, it will for sure lead to decline. Like this is also very well said thing, that you have to consolidate all the things that you are doing rather than just expansion. And if you are not following, if you are not focusing on the consolidation, for sure it will lead to decline. So you do not have to do that. You have to keep consolidating all the things that you are doing on your regular basis. If you are doing, let's say if you did 10 questions today, and let's say you were able to make 6 or 7 questions, so first of all, appreciate that yes, I did those 6-7 questions, and उसके बाद में जो 3-4 क्वेश्चन नहीं बने, analyze them properly, and in fact जो 6-7 क्वेश्चन बन गए हैं, analyze them once again. Then move to the questions जो आपसे नहीं बने हैं, analyze them with great, give them the great time, like give them sufficient time that you are analyzing them. You are noting this down, that these are the mistakes, या फिर these are the reasons कि जिसकी वजह से मेरे से क्वेश्चन नहीं बना. Go for the video solutions, watch them, then realize your mistakes and realize the fact, like realize what you are doing wrong, right? And then you have to improve that thing. Then only you will be able to make like 10 out of 10 questions. The next time when you will be taking the 10 questions and you are able to make those 10 questions, that's when you will start seeing the improvement in yourself. द नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट नोट्स. लाइक दिस इज दैर कि जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप उसमें नोट्स बना रहे हो, जितने भी लेक्चर के क्वेश्चंस थे वो लेक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो आप अपने मेन नोट्स जो हैं उनमें ऐड कर रहे हो. बट please, like believe me, develop this habit of making the short notes, especially when it comes to physics. And a similar thing is there in physical chemistry as well. So here also you have two choices. Either you can move lecture by lecture or chapter by chapter. Like there are certain students जो हर एक lecture के बाद short notes बनाते हैं. Like that, that is something that is helpful, because कि आपने आज ही lecture देखा है, so there are 10 things that are there in your mind. ठीक है, आपको almost सब कुछ याद है. So even if there are some कोई छोटे छोटे points हैं वो miss नहीं हो जाएंगे. You will make sure this, because अगर आपने आज lecture देखा तो आप आज ही उसके short notes बना ले रहे हो. But there is another strategy as well. There is another way as well. You are making the short notes after the completion of chapter. So with that you can make sure this key, if one topic is related to the other, you will be able to relate that in the short notes in a better manner as compared to the way when you are going lecture by lecture. So both the ways are good, both the ways have their own advantage and own disadvantage. You have to see कि आपके लिए कौन सा आपको better लगता है, with which you can go ahead, with which you can do better, कि आप lecture by lecture या फिर chapter by chapter. But please make the short notes, especially when it is coming to the physics. Do not skip this, because at the very end, for example, let me give you an example of that. Class 12th का जो first chapter है, that is basically the electric charges and field, that is of around 20 lectures, 21 lectures. So it's not possible for you to revise that these all lectures, these 20 lectures, within a short span of time. You will need short notes for that, and in real, at the very end, the short notes will help you. अब शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना है, लेट मी टेल यू दैट.
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में तभी लिखना है व्हेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू आर मेकिंग अ मिस्टेक इन सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. If you are making the mistakes again and again in the similar type of question, then only you have to mention that question in the short notes, so that when you are revising the short notes, तब क्या होगा कि वो क्वेश्चन आपके सामने एक बार आंखों के आ जाएगा. सो यू विल मेक श्योर दिस दैट यू आर नॉट डूइंग दैट बिग मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन और इन द मॉक टेस्ट. तो आपको क्वेश्चन तभी लिखना है जब वो या तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या फिर आप उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो. द नेक्स्ट पार्ट इज जो आपको शॉर्ट नोट्स में मेंशन करनी है, यू शुड मेंशन ऑल द फार्मूलाज. ऑब्वियसली व्हेन यू आर मेकिंग द फिजिक्स शॉर्ट नोट्स, ऑल द फार्मूलाज शुड बी देयर एंड ऑल द इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट्स शुड बी देयर, so that when you are revising the short notes it should not be in your mind कि शॉर्ट नोट से रिवाइज कर रहा हूँ तो शायद ये पॉइंट्स रह जाएंगे. लाइक all the conceptual points, 100% conceptual points in a short manner should be there in your short notes, so that when you are revising the short notes it should be there in your mind. You should have that much confidence कि मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है. लाइक विद द हेल्प ऑफ दोज शॉर्ट नोट्स, बहुत कम टाइम में मैंने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है. इट शुड नॉट बी इन योर माइंड कि मैंने इन पॉइंट्स को ऐड नहीं करा था शॉर्ट नोट्स में, इस लेक्चर के ये पॉइंट्स तो मैंने शॉर्ट नोट्स में ऐड ही नहीं करे हैं. सो दैट बीइंग द रीज़न, व्हाट विल हैपन कि जब आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करोगे, इट विल ऑलवेज कीप गोइंग इन योर माइंड कि मैंने पूरा रिवीजन नहीं किया है, कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, कुछ फॉर्मूलाज छूट गए हैं. सो यू डू नॉट हैव टू डू दैट. यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम you have to make sure that they are the short notes. They do not become the long notes, because what happens sometimes that we try to include almost everything in the similar manner. जो notes हैं उन्हीं को copy करते जाते हैं short notes में, तो like there is no meaning of making the short notes at that moment. You have to include everything, but at the same time you have to make sure this that you are compressing those points, you are making those points short and you are adding them in your short notes. And like इतना शॉर्ट रखना है उसको कि आप उसको देखो तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाए. टू रिवाइज दैट, टू रिकॉल दैट, शॉर्ट नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेक श्योर दिस दैट व्हेन यू आर मेकिंग द शॉर्ट नोट्स, you are making it in such a way that whenever you are revising that, whenever you are looking at it, you are able to recall everything. So now the next universal point comes here as well, that is the PYQ practice. When you will solve the PYQs, then only it will be there in your mind कि किस type के questions पूछे जाते हैं examination में, how we have to manage our time when we are there at the examination. You will get all these ideas when you are solving the PYQs. So you have to move in a certain sequence कि सबसे पहले आपको NEET के PYQs करने हैं, then you have to move to JEE Mains PYQs, and after that, as we all know that कि नीट का लेवल जो है दैट इज़ ऑल्सो राइजिंग ईयर बाय ईयर. वी नेवर नो, लाइक इट इज़ वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल कि किस लेवल का पेपर 27 या 2027 में 2028 में आ जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर, लाइक बहुत सारे लेक्चर्स में भी अब ये इंक्लूडेड होता है कि जो रेलेवेंट जेई एडवांस के PYQs हैं, यू हैव टू सॉल्व दैट एज वेल आफ्टर यू आर डन विद द नीट एंड जेई मेंस PYQs. द रीज़न बीइंग कि लाइक दिस इज दैर कि हो सकता है कि वो जेई एडवांस का जो PYQ है वो एज इट इज़ उठ के पूरा का पूरा नहीं आए नीट में, बट देर आर ग्रेट चांसेस कि उस लाइक एक क्वेश्चन में जो जेई एडवांस का एक क्वेश्चन है, शायद लाइक फॉर नीट इट कैन बी 4 क्वेश्चंस, लाइक इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्वेश्चंस एंड उसी सिमिलर कंसेप्ट पे, उसी सिमिलर वे में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सिमिलर डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा रीच करा जा सकता है एज द लेवल इज राइजिंग ईयर बाय ईयर. So as I have always suggested to have a hard copy at least for the PYQs, again in this video the suggestion would be same, to have this 39 years Oswald PYQ book. Let me give you why this book is better. The first point being all the formulas in the revision notes are mentioned. The revision notes are there that you can revise very quickly. The mind maps are there that you can paste on your walls, that you can just have a glance of those mind maps before the mock test, before you are there to solve the PYQs, before you are there to do the question practice. So if you have to revise the chapter very quickly with the help of mind maps, the tables, and the revision notes that are given in this, literally they are very great. Like in those revision notes almost all conceptual points are cleared, like all those conceptual points are mentioned in a very short form, so that you are able to recall it. At the same time आपको
बहुत कम टाइम लग रहा है. You are able to do it in a short span of time. At the same time, you are covering everything. Every conceptual point is mentioned in a compressed form. Every formula is mentioned there in revision notes. So you are able to revise it very quickly. And as its name is suggesting, it is containing all the relevant PYQs of last 39 years. Because if you go to internet, there are 10 PYQs that you will get जो कि irrelevant है, जो आप सिलेबस से हट चुके हैं, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी सिलेबस के बाहर है अब ये सब. So you will not have to worry if you are having this book, because this contains all the relevant PYQs of the last 39 years. So अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस you can do if you are solving only the NEET PYQs also, because like last 39 years के PYQs हैं, so you will get sufficient number of questions to practice. So like there would be one coupon code in the description and the Amazon link as well, with the help of which you can get great offs on this book. So make sure to check the description once. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बहुत सारे बच्चों का कंसर्न था कि हमें एच सी वर्मा सॉल्व करनी चाहिए, क्या हमें डी सी पांडे सॉल्व करनी चाहिए. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी येस, करनी चाहिए, बट ओनली इफ़ आपका इससे पहले जितनी चीज़ें मैनेज हो जानी चाहिए वो आप मैनेज कर पा रहे हो. इससे ऊपर जो प्रायोरिटी की चीज़ें हैं आप वो अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, उसके बाद भी आपके पास में कुछ टाइम बच रहा है या फिर आप उसमें से कुछ टाइम निकाल सकते हो, देन ओनली गो टू सच बुक्स. इट्स नॉट लाइक दैट इफ़ यू हैव टू सॉल्व इट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. क्या मैंने एच सी वर्मा सॉल्व करी थी बट नॉट एकदम कंप्लीटली मैंने उसको सॉल्व नहीं किया था. लाइक फ्रॉम वन क्वेश्चन टू द लास्ट क्वेश्चन आई डिडंट सॉल्व इट लाइक दैट. I solved certain relevant questions out of that, and that too only after I was able to manage like my lectures. and उसके बाद में भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने करी है, PYQs करे हैं, उसके बाद में you have to come to these books. If you are able to manage it along with all those things, then that's very great. Carry them ahead, especially when you are class 11 student, आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम है. So if you are able to manage your time in a very well manner, and you are having the extra time to solve some books, so for sure you may consider these books. So let's come to the next important point, that is regarding the modules. Like many of you were asking कि like मेरे पास अर्जुना और लक्ष्य दोनों के modules थे, तो क्या मैंने पूरे modules को solve किया था, like from the very first question to the very last question. Like many of you were asking कि modules लेना compulsory है. So let me clear all these doubts one by one. So the first thing, क्या मैंने modules को solve किया था? Again the same thing, yes, but that does not mean कि मैंने first question से लगा के, let's say there are 1000 questions, so first question से लगा के 1000 like जो last question था उस तक solve किया था. It's not like that. Like when you are doing the question practice, you have to do some smart work as well. कि जब आपने एक क्वेश्चन करा एंड यू आर सीइंग कि सेम टाइप के और 10 क्वेश्चंस हैं, सो इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल दोज 10 क्वेश्चंस. यू डू 2 or 3 ऑफ द सेम टाइप, देन यू मूव टू द नेक्स्ट टाइप. सो नाउ लेट्स कम टू द मास्टर पॉइंट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. Like now let me give you a very practical case. Like let me try to explain you with a very practical case that I am a class 11th or class 12th student, और कल सुबह से मैं एक फिजिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा. So what I have to keep in mind, what mistakes I have to avoid, how I have to approach, let me tell you. So the first and foremost thing that I had mentioned in the starting of the video as well, कि मैं अपने चैप्टर को लेक्चर्स की हेल्प से स्टार्ट करूँगा. I'll go to the very first lecture, I'll watch it with a very great focus, मैं अपने अच्छे से नोट्स बनाऊँगा. Then after the completion of the lecture, now like I am explaining it to you with a very practical case, with a very practical example. मैंने एक लेक्चर को कंप्लीट कर लिया, लाइक द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड इट. आई हैव टू वॉच इट विद वेरी ग्रेट फोकस. उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेक्चर कंप्लीट हुआ, एंड देन से I have 2 or 3 doubts, then I'll try to clear that. From where I have to clear that, first of all revise the notes on your own. Again watch the lecture, like that part of lecture जहाँ पे आपका डाउट है, जो कंसेप्ट में आपको डाउट है, watch that part once again, revise the notes once again. And even after that you are not able to clear your concept, you may consider asking that same doubt in the next live class, or you may asking that doubt to the multiple AI that we are having in today's world. You may ask those doubts there, you will be able to clear that, right? After I have completed one lecture,
I'll try to make the short notes as well कि मैं उसके short notes अभी ही बना लूँ because everything is there fresh in my mind. So I'll be able to compress all the conceptual important points and I'll be able to put them in my short notes. So I'll do that. The third thing that comes is I have made the short notes. That means I have revised it automatically. Like if I'm making my short notes, everything is going into my mind once again, right? Everything is going into my brain once again. So I have revised that way. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इज डीपीपी. उसके बाद में मैं डीपीपी को सॉल्व करूंगा. नाउ लेट्स से डीपीपी में 15 क्वेश्चंस थे, उसमें से आई कुड मेक ओनली से 8 और 10 क्वेश्चंस. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, आई विल एनालाइज देम एज वेल कि येस आई एम नोइंग द कंसेप्ट वेरी वेल नाउ. मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया था, करेक्ट भी सॉल्व किया है. नाउ आई विल एनालाइज देम वंस अगेन टू मेक श्योर दिस दैट आई एम नॉट लीविंग एनी पॉइंट और एनी थिंग दैट इज देयर इन द क्वेश्चन. उसके बाद में आई विल कम टू दोज क्वेश्चंस जो मेरे से नहीं बने, राइट. आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सेप्ट दिस कि ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बने. देन आई विल हैव टू फाइंड द रीज़न, आई विल हैव टू फाइंड द कॉज कि ये क्वेश्चंस मुझसे क्यों नहीं बने. उन क्वेश्चंस को मैं एक सेपरेट नोटबुक में, मेनी ऑफ यू वर आस्किंग कि क्या डीपीपी के लिए नोटबुक बनानी है. एक नोटबुक ऐसी बनाओ जिसमें आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिखोगे. लाइक फिजिक्स के लिए एक अलग सी नोटबुक बना ली जिसमें सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिखना है. या तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या आप उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर वो क्वेश्चन आपसे पहली बारी में नहीं बना था, राइट. सम ट्रिकी क्वेश्चंस आर देयर. You only have to write those questions. You do not have to write each and every question into that notebook. You have to write only the questions that I just mentioned. उसके बाद में लेट्स से जो 5 क्वेश्चंस मुझसे उस डीपीपी में नहीं बने थे, उनको मैं इस नोटबुक में लिखूंगा, उसका वीडियो सोल्यूशन देखूंगा, खुद से 2 बार पहले रफ में सॉल्व करूंगा. देन एक बार फेयरली इस नोटबुक में, जिसमें जो मैंने डीपीपी की एक नोटबुक बनाई है जिसमें मैं ट्रिकी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें मेरे से मिस्टेक हुई थी वो लिखूंगा. आई विल सॉल्व देम वंस अगेन फेयरली इनटू दैट नोटबुक, सो दैट व्हेन लाइक से आफ्टर अ मंथ आई हैव टू रिव्यू सम क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट हैं या जिनमें मैंने मिस्टेक्स करी थी. सो इफ आई एम हैविंग द नोटबुक ऑफ दैट, आई विल बी एबल टू रिव्यू दैट इन अ वेरी वेल मैनर, राइट. उसके बाद में मेरी डीपीपी भी हो गई. देन आई विल मेक श्योर दैट आई एम रिवाइजिंग द सेम लेक्चर बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर. लाइक आई एम रिवाइजिंग लेक्चर नंबर 1 बिफोर लेक्चर नंबर 2, and this way I'll complete my all the lectures. Now I have completed all my lectures, I have completed the short notes, I have completed the DPPs. So this much is completed. Then I'll move to some mock test. Like जो mock test है उसका syllabus complete करके, लाइक से ये एक चैप्टर जो था फिजिक्स का वो मॉक टेस्ट में आना था, आई कंप्लीटेड दैट और मैंने देन उसका मॉक टेस्ट भी दे दिया, राइट. एंड यू हैव टू एनालाइज दैट देयर एज वेल. जो क्वेश्चंस नहीं बने, यू हैव टू राइट इन द वेरी सेम नोटबुक. यू हैव टू एनालाइज दैट मॉक टेस्ट एंड उसमें से उन कुछ क्वेश्चंस को पिक करना है जो नहीं बने, और जो बन भी गए थे उनको भी एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेना है फिर से. लाइक यू हैव टू एनालाइज एवरी ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल. उसके बाद में जो जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनको सेपरेटली नोट डाउन करा, उनको उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखे, उनको समझा, उनकी मिस्टेक्स को नोट डाउन किया एंड उनको भी सॉल्व कर लिया एट द वेरी एंड. नाउ आई लाइक अगर ये सब चीज़ें करने के बाद में कुछ असाइनमेंट साथ साथ में मिल रही हैं उनको सॉल्व करने के बाद में, इफ़ आई एम हैविंग द टाइम, then I'll be moving to some standard books that are there in the market. Then I will move to the modules that are there. So that's how you have to approach the chapter. Like I tried to include all the points. एक point रह गया, that was of PYQs. Like after the completion of the chapter, and you can do it before mock tests or along with mock tests. You should solve the NEET PYQs, JEE mains PYQs, and it is something जो कि most of the times lectures के साथ में ही complete हो जाता है. Like all the teachers that are there teaching you in the lectures, वहाँ पे ही जो PYQs हैं मेजरली वो कंप्लीट हो जाते हैं. बट स्टिल यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो वंस द चैप्टर इज कंप्लीटेड. So like with this practical example, I try to explain how you actually have to approach the things, how you actually have to approach a physics chapter. I just try to explain that. I hope almost all the doubts of yours are clear. Like everything is almost clear. I have answered almost every doubt, I have answered almost every question. I hope it helped you.
I hope you learned something new from this video and you are taking some good values from this video. And if you do, make sure to hit the like button and make sure to subscribe the channel, because like this only बहुत सारा content और भी इस channel पे आता रहेगा. Very soon I'll be joining my MBBS college as well. Like the counseling results are to be declared very soon. So I'll be, discussing all that, and I'll be telling you all guys that what college I'm going into, like what is the college that has been allotted to me, and all the journey ahead I'll be sharing on this channel. So make sure to subscribe it. For now, goodbye.